Welcome guys to UG Talk Session 8 and I hope you know I am Priya Dikshit और मैं आज यहाँ पर हूँ फिर से आप लोगों के साथ to talk about things related to UPSC और I hope you guys are doing well. Okay, so guys, I just want to talk something before starting the session कि हम लोगों ने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस करे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, इतना भी मुझे पता है. सो इनफ ऑफ दिस इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन रिलेटेड टू द प्रिपरेशन एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू थिंग टू नो अबाउट द सर्विसेज. हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग फॉर, कौन सी सर्विसेज हैं, क्या सर्विस में क्या होता है. एंड तुरंत यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में सुन के हमें सबसे पहला थॉट आता है कि आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस. सो वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग दैट वील बी टॉकिंग अबाउट all the services that are present in the civil services examination with the achievers itself who are in that service, particular service. Okay, so today I want to tell you that there is a very special guest on our session, Mrs. Sabiha Rizvi, who is an Indian Revenue Officer from 2009 batch, and let us welcome her and then I will introduce. So let me first introduce her. I think she'll be here by then. So yeah, ma'am was born in Kota, Rajasthan, and then she did her graduation from BA Honours from Aligarh Muslim University, and then cleared UPSC Civil Services examination in her first attempt itself. Also, she is presently as a Joint Commissioner of Income Tax in Jodhpur. So let us welcome her and get some insight about the Indian. I tell you people that ma'am was really excited to be here to talk to you guys. Actually, she was excited because she even said that at her time she didn't get that much guidance. Nobody was there to tell her what it's going to be like, how to go about it. But now she is here to help you all and us for knowing the services, for knowing how we'll prepare and how we must go through the journey. So thank you for being here, ma'am, first of all. The pleasure is all mine. Thank you so much, Priya. How are you? I'm good. Okay, let's start. Before we begin, I would just like to add one thing. I have tried my best to be free at this hour. लेकिन अगर बीच में if some disturbance comes, so I'll be very sorry about that. But we are going to try and take this session to its logical end. No problem, ma'am. Actually, it would be good for the people who are like watching this session right now because they would get the insight that yes, when you are working, you might get some things in between and you have to like deal with them. Okay. Okay. All right. The first question that I wanted to ask you that about a decade ago, you got your name in the list and then you saw that yes, finally you are in the services. And then you now at this point of time, you have completed 11 years of service. So how is that feeling? How do you feel now? That was it worth it, that preparation, all those things? I think, I don't know if you have already told this to others, but I got through in my first attempt. So like everybody else, I was expecting my preferences were first was IAS, second was IRS IT, and third was IPS, third was IFS, third was IFS, IPS, something like that. I actually hadn't thought that beyond. I was hoping for IAS and IRS IT. So what happened, the result came and my name was on the list and I was very sad. But now when I look back and I remember, I was so ungrateful at that point of time when the result came. My rank was 303. और हमने ऐसी थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाता है कि आपकी रैंक और प्रेफरेंस या जो भी है आपको क्या मिलने वाला है. So I knew that I'll be getting IRS IT and then I was so sad और मम्मी पापा भी बेचारे
they kept on saying, it's all right, Sabiha, you can try again. And everybody was consoling me. And then later in the night, around 12:30 a.m., I was crying with my head in my pillow. And then I used to have one small phone, the non-smart one, and then that phone started ringing. And then होता है ना, मतलब you don't realize it what you have got, especially वो जो सिल्वर और गोल्ड मेडल वाला जो एक फीलिंग नहीं आती है कि भाई जो हमारी पहली प्रेफरेंस थी वो तो हमें मिली नहीं, हमें तो हमारी सेकंड मिली है. Yeah. उसके बाद दुनिया ऐसा नहीं है, दुनिया की बातें कभी कभी दे हेल्प यू ऑल्सो. Then they called me and then they congratulated me. They told me, which I didn't know. They told me that I was the first person ever to clear civil services examination from the division that I belong to in Rajasthan. It's Kota Bundi Jhalawad. So nobody else belonging to that place had cleared it before. So that was it. And then there was that beautiful, wonderful training period. Uh, and then there was this. Then 2 years later, there was this my first day in office. Or कहने को you are trained with. I mean, you are. The faculty and the academies, they try their best to equip you, but when the reality strikes, वो बहुत अलग होता है. मतलब आपकी ट्रेनिंग काम आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हकीकत में, आई रिमेम्बर इट वाज माय फर्स्ट डे. एंड देन बैक देन देयर यूज्ड टू बी पेपर रिफंड्स. तो जो पहला डॉक्यूमेंट आया था साइन करने के लिए, दैट वाज फॉर एन अमाउंट ऑफ, इट वाज रनिंग इन क्रोर्स. And I was so, what to say, I was so nervous and I didn't know. I had to act in front of my inspector and other staff as if I know what I'm doing. And then I mean, those things were there. And then first few years were very difficult. It was very, very difficult. And now if you are saying that I have to tell my journey in a few words, then I would say that it has been very, very good. As the years passed, I worked with different sections of the department. For example, I don't know how much you all know about this. There's assessment, if you know, it's like scrutiny of income tax return. The returns are selected, and then we call people. We decide if the income that they have shown is right or wrong, and then there's audit of our own work. And then there's international taxation. I have worked there. And then mm, there's I have been a part of numerous search and survey operations, which are called as raids in our daily language. And I have been at Jaipur for 4 years, and then I had a wonderful stint at Tamil Nadu. I was not trained in the language. वो तमिल हमें उतनी properly आती नहीं थी. So because of I'm married to an officer in armed forces, so he got posted there, so I just followed him. और बहुत मजा आया. I got a commendation card there because of my work during Tamil Nadu Assembly elections 2016. उसके बाद वापस से I have come to Jodhpur. So बहुत कुछ है बताने को, but I would like to say in a nutshell that in first few years I just learned that how everything works, and then the last few years have been spent in making everything work. So it's all good, all very good, in fact. So we can see that it started with crying that yes, I got IRS. Oh my God, I didn't get IS. And then it ended here that now you're here telling us about Indian Revenue Services. And it was really beautiful. The way you told it, it was really beautiful. I think none other has done this before on this session, on these sessions. Yeah. Now, the next question is actually related to the thing that you cried about in the first place. Okay. लोगों को जब भी सुनाई पड़ता है that UPSC civil services examination, they are like, okay, I'm going to go to IS, IPS or IFS. They don't think about the other 21 services that are there, and they're just focused on IS, IPS and IFS. Why is it? Why is it like that? Because I think it's the charm, or they do not have knowledge about the other services. What is it according to you? I'll again give my own example. I belong to
not exactly Kota. It's a very small town. It's called Ramganj Mandi. You won't find it on the map. It's Okay. 60 kilometers from Kota और वो अभी भी उतनी छोटी जगह है जितनी पहले थी. और वहां पे भी माय टीचर व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 9th ही टोल्ड मी अबाउट सिविल सर्विसेज. वहां पे भी व्हेन आई डिसाइडेड फॉर सिविल सर्विसेज इट वाज कॉल्ड एज आईएएस. फर्स्टली इट वाज नॉट प्रिफर्ड क्योंकि कोटा में सब लोग डॉक्टर इंजीनियर ही बनते हैं. वहां पे सिविल सर्विसेज का उतना जोर नहीं है अभी, फिर भी थोड़ा बढ़ रहा है. तो मतलब एंड एवरीबडी यूज टू रेफर इट टू आईएएस का एग्जाम. ये तो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स द हिंदू जैसे हमारा वही हम दूसरी जगह भी बताते हैं. माय हाउस वाज एट सच अ रिमोट प्लेस कि द हिंदू जो है वो 2 दिन लेट पहुंचता था. तब भी आई यूज्ड टू रीड इट. तो उसको पढ़ने के बाद आई रियलाइज कि ये एक्चुअली एग्जाम का नाम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है. और द एंटिटी विच होल्ड्स द एग्जाम इट्स कॉल्ड यूपीएससी. तो जो हम लोग आईएएस करते रहते हैं बट स्टिल फिर वही. अब एक्सपोजर हमें बिल्कुल नहीं. हमें इतनी सारी सर्विसेज हैं तब पता चला जब मेंस का एग्जाम फिल कर रहे हैं. मतलब मेंस का जो फॉर्म होता है दैट आई वाज गोइंग टू फिल. देन आई रियलाइज कि मतलब देन आई ट्राई टू फाइंड आउट कि और सर्विसेज क्या क्या करती हैं. तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर फर्स्ट वाज आईएएस बिकॉज दैट्स व्हाट वी हियर अबाउट ऑलवेज. मतलब हम लोगों को एंड देन इट्स अ काइंड ऑफ कॉलोनियल लेगेसी क्योंकि जब ये एंटिटी जब ये सर्विस स्टार्ट हुई थी तो सारा जो gamut of power and functions was given to that particular identity only. वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपना देश प्रोग्रेस करता गया वैसे वैसे उसका बाइफर्केशन होता गया because we are a huge country. So we needed to diversify and we needed to bifurcate. लेकिन वो शुरू से ना हमेशा से हम लोग आईएएस आईएसी बोलते हैं इसलिए लोगों को ढंग से पता भी नहीं होता है कि जैसे लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि आप 5 साल डीएम या कलेक्टर बन के उसके बाद आपके साथ क्या होता है. मतलब आप जैसे Exactly. एज एन आईएएस ऑफिसर आपका 10 साल के बाद आप क्या किस तरह का आपका वर्क प्रोफाइल होता है ये लोगों को आईएएस के बारे में ही नहीं मालूम. तो आप दूसरी सर्विसेज को तो Exactly. You're right. भूल ही You're जाइए. right. उसके बाद आईआरएसआईटी आई टोल्ड यू आई यूज्ड टू फाइंड दीज ये जो रेड वाली चीजें होती हैं हमें पता नहीं क्यों आई यूज टू गेट अट्रैक्टेड टू देम. एंड आई यूज टू एज एन इंडिविजुअल आई गॉट अट्रैक्टेड टू आईआरएसआईटी बिकॉज रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन होता है इट्स वेरी अंडररेटेड. और आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स एज वेल. तो उस हिसाब से हमारा दिमाग चलता था. आई यूज टू थिंक कि आईएएस तो सब कहते हैं तो अच्छा ही है बेस्ट है तो आईएएस लेना है. और आईआरएसआईटी में हमारा खुद का ये था. एक रीजन और हमें इसलिए लगता है द रीजन फर्स्ट इज दैट अदर सर्विसेज आर नॉट टॉक्ड अबाउट एट ऑल एंड द रीजन बिहाइंड इट रैंकिंग सिस्टम. क्योंकि जो हम लोगों का ऑब्वियसली मतलब देयर हैज टू बी अ रैंक. किस बंदे के या बंदी के कितने नंबर आए हैं एक लिस्ट तो बननी ही बननी है. बट सिंस एजेस ऐसा रहा है कि लोग आईएएस को जैसे कि colonial पीरियड से चलता आ रहा है most of the power is being I mean most of the power was concentrated with the officer belonging to IAS. That's why Yeah. it was those who would rank the best in the examination would be getting it IAS and then IPS and then all those things. But I think times are changing. They have already changed. There were many of my batchmates who had known, who had their family members as IRS officers or somebody distant as IRS officers or any other service. For example, Indian Audit and Account Services is also very underrated one. People usually don't learn about it, but it's one of the premium services and very what to say powerful one also if you are into par kind of thing. सो वो रैंकिंग की वजह से और कॉलोनियल लीगेसी की वजह से ये चाम है. बाकी सब बढ़िया है. डिपेंड्स ऑन यू आप किस तरह के हैं. Exactly. That is why, ma'am, we thought of starting these sessions at knowing the services. Actually, people really don't know about the services, even about True. IAS, as you said, that they just Yeah. know that yes, there is something like IAS and you go as a DM or you become a collector. That's it. Nothing else. Right. That what are your duties, what you're going to do.
Thank you for telling all this to us. And now, clearing civil services examination in your first time, which is really, really difficult and I think inspiring actually for us, for all of us. तो आपका ये ड्रीम पहले से था, as you told, you're from a place where people do not usually know about this thing and nobody has cracked before. So how did you dream about it? How did you go for it? What was your strategy? How did you like go for it? Because you did it in first attempt. Yeah. Um, okay. Actually, I used to be a bright student, bright in the sense very naughty, but it's like I will learn the subject on my own. Even when I was in standard 8, 9, 10, I'm talking about that period. तब भी हम अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाते थे, उनकी एग्जाम में उनकी तौबा तौबा उनकी आंसर शीट में एग्जाम आंसर भी लिखते थे मतलब बट आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब कि सब कुछ आता है और दूसरों को भी आई वाज नेवर लाइक कि नहीं मैं क्यों नहीं बताऊं या ऐसा भी क्या है। तो देयर वाज माय सोशल साइंस टीचर, देयर इज माय सोशल साइंस टीचर गोविंद शर्मा सर हैं। सर अभी अब तो माशाल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस ही इज अ प्रिंसिपल इन अ वेरी गुड कॉलेज एट झालावाड़। बट बैक देन सर हमसे काफी नाराज रहते थे कि तुम अपना तो पढ़ लेती हो और फिर मस्ती करती रहती हो, डिस्टर्ब करती रहती हो क्लास में वगैरह वगैरह। मतलब आई डिडंट यूज टू लाइक हिम दैट मच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर एक बार एक दिन अरेंज पीरियड में ही केम एंड देन वी ऑल वर हैविंग फन एंड देन ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि सबिहा you should not waste yourself. You are a very talented girl. You are very intelligent. You are a selfless kind of person, and you are the kind of people that the country would be needing in future. एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हमें वही आईएसी उन्होंने बोला था लफ्ज, और सर ने समझाया कि यहाँ पे सब लोग क्या कहते हैं, बहाव के साथ बहने वाले हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू फील यू चैलेंज्ड। मतलब सर को इतना पता था कि आई फाउंड द एग्जाम, मतलब ही पोर्ट्रेड इट टू बी अ वेरी चैलेंजिंग थिंग कि हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है। मतलब he told me कि I don't know, I've never appeared for these IIT exams and other exams. I can't compare the toughness, but he told me कि सबसे ज्यादा मतलब चाइना का एक एग्जाम माना जाता था तब जब हम छोटे थे, और इंडिया का नेक्स्ट नंबर पे टफेस्ट एग्जाम माना जाता था ये। तो आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड एंड वेरी एनर्जाइज्ड। उसके बाद फिर देश सेवा तो शुरू से था, वो स्कूल में इतने सारे वी होल्ड दोज इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम्स एंड रिपब्लिक डे एंड देन 91 कारगिल वॉर वाज देयर। आई वाज क्वाइट मूव्ड, पता नहीं क्यों फौज में जाने का आइडिया क्यों नहीं आया, बट I thought कि I'm going to do something for the people. Then when as I grew up, my family started doing bad financially. और फिर ये हो गया कि हमने अपना एम ही उस हिसाब से सेट किया था, तो वो बीच में चेंज नहीं हो पाया। एंड देन आई थॉट कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। माय सिस्टर शी वाज माय मेंटर, शी गॉट स्टक इन अ वेरी बैड मैरिज। मतलब चीजें बहुत ज्यादा जैसे जैसे हम बढ़ते गए ना, वो अर्जेंसी ज्यादा होती गई एक्चुअली। एंड देन मतलब आई एम अ डबल गोल्ड मेडलिस्ट इन माय यूनिवर्सिटी, एंड एवरीबडी केप्ट ऑन सेइंग कि तुम एमए कर लो या तुम कोई जॉब कर लो या तुम कुछ और कर लो। सो आई थिंक व्हाट गॉट मी थ्रू was my single mindedness. I had decided that I'm going to give myself one chance because I could not have afforded more than one. My father took loans to send me to Delhi. दिल्ली में भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे, माई एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी गुड। बट ठीक है, दिल्ली जाना भी इट चूंकि आई वाज फ्रॉम रामगंज मंडी, it exposed me to the different kind of study material that I could have used, and I made a few good friends, and then I came to know so many things. Matlab, I went to coaching for maybe around 2.5 months, but I stayed there at Delhi. I stayed there at Delhi all alone in a room with no friends, and I had given, as I have said, I had given myself only one chance, और I had decided अगर एक बार में नहीं हुआ तो I will leave this dream of mine and I would do some other job, क्योंकि जॉब तो हमें मिल ही जाती, मतलब by God's grace अच्छे, मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह काफी अच्छी थी, but God has been very kind, very very kind, and I got through.
नो मैम, इट इज रियली इंस्पायरिंग एक्चुअली। जो आप ये कह रहे हो कि समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती जाती हैं कि आप जो ड्रीम कर रहे होते हो उस टाइम पे लोगों को नहीं पता होता है दैट यस, गॉड इज एक्चुअली पुशिंग यू टुवर्ड्स योर ड्रीम, and I think those bad situations also worked in that case. Actually, yeah, that's right. And now, and right now, you have no idea that you are inspiring so many other people, including me, including me. Oh, Yeah. thank you so much. So, ma'am, actually, we get a lot of messages on our portal that I am not motivated enough. I don't know. Right now, the COVID situation is also there, and people message us that, yes, I'm not motivated enough. I don't know what to do, but this is the only option that we have got. I really want to go for civil services, but I don't know how to go about it because we don't feel that motivation. And you must have seen this, that motivation is really necessary for this examination. You cannot study Yeah. for like hours without any like aim, without any motivation behind. So how did you keep yourself motivated? I know that your situations were so that you had a particular aim that yes, I need to go through it, but then still on a daily basis, what was your motivation? How did you keep your mind focused on this particular thing? See, I'll first start with what originally motivates people, and then I'll come to my own example what happened with me. So, originally, usually what happens, there's this नेशन सर्विस थिंग, वही जो सब में आता है एक हम लोगों की, चाहे इफ इवन इफ इट्स अ बॉय और अ गर्ल इन एवरीबॉडीज Yeah. लाइफ हु वांट टू डू समथिंग विद देयर लाइफ, देयर इज अ फेज Yeah. व्हेन यू आर रियली पेट्रियोटिक, मतलब आपको एकदम ऐसा लगता है कि बस हम पैदा ही देश के लिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. यू Hmm. शुड रोप इन दोज फीलिंग्स, बट that's going to motivate you, but not all the time, because this exam itself takes 1 year. उसके बाद उससे आप Hmm. पहले प्रिपरेशन करते हैं, बहुत लंबा सफर है. तो Hmm. जो कंट्री के लिए सर्विस वाला जो भाव है, that was that's the spark. But now the fire, second motivation that people find inspiring is what to say, that prestigious thing, Hmm. और मे बी दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग द वे इट स्ट्रक मी, कि जो बहुत मुश्किल काम है, कुछ लोगों को मजा आता है, मतलब इंटरनली दे व्हेन दे स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स इजी, देन दे आर लाइक अरे थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, मतलब समथिंग लाइक दैट. इट इज लाइक दैट. आई विल गिव अ वेरी stupid example, but it is like that, the girl which is not with these boys, if she's not talking to them very properly, they will be like नहीं नहीं, अब तो मैं इससे ही बात करके रहूंगा. So the same thing is with this also. If you find something कि जो मुश्किल से मिलेगा ना, उसमें ज्यादा मजा आएगा. Again, this kind of motivation is very short lived, very very short lived. आप जब आप करने बैठते हैं तो इतनी बहुत मुसीबत आती है, you feel stuck, क्योंकि क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है, आपने जो Hmm. चीज पिछले महीने पिछले हफ्ते ही पढ़ी थी, अचानक आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, आपको याद आएगा कि आई डोंट रिमेम्बर इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट आई रेड अ वीक बिफोर. फिर वो आपका जो है, अब अब आप इस मुसीबत में है कि जो मैंने पिछले हफ्ते में ऑलरेडी टाइम लगा के पढ़ चुका हूँ, वो चीज मैं दोबारा पढ़ूं, या जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो Yeah. ये बहुत ज्यादा एक्चुअली में मोटिवेशन के लिए. सब लोग कहते हैं कि किताबें पढ़ो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महान लोगों की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, बट मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर से ही आएगी. if your parents, and then you should understand कि why are you going to appear for this exam. अगर if it's for service of the nation, there are many other options which I said, जैसे आप फौज ज्वाइन कर लीजिए, आपको इतना है करना है तो. और अगर जैसे आपको एनजीओज वगैरह बहुत अच्छा काम करती हैं, मतलब इफ यू इन्वेस्ट योर टाइम इन देम, दे if you have really that social service kind of feeling, then you can go for NGOs. और चैलेंजिंग वाला भी, देर आर मेनी अदर challenges available. And then there's one problem, aspirants keep contacting me also. एक इश्यू जो हमें सबसे बड़ा लगा, जो उन लोगों को लगता है कि उनका मोटिवेशन का रीजन है, लेकिन वो है नहीं, वो ये है कि घर वालों ने बोला है कि आप Yeah. तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो,
और तुम तो यू आर वेरी स्मार्ट, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो एंड या फिर इस टाइप की चीजें कि अरे मेरा जो फ्रेंड है उसने तो निकाल लिया, अब तो मुझे भी निकालना पड़ेगा। दीज काइंड ऑफ मोटिवेशन आर अगेन शॉर्ट लिव, मतलब आपको बीच बीच में लगता रहेगा कि I would like to say you for keeping yourself motivated. The best thing is to uh, say to yourself every day. Nobody else is going to motivate you. आपको एक तो you have to spend so much time with yourself. आप ही अपने साथ रहेंगे. ज़्यादा I have never believed in, I don't know how, I have come across successful candidates who had been doing studies in groups and then who had been interacting a lot during their preparation. My preparation completely different one. I used to stay aloof, aloof in the sense if somebody needs my help, I'll be there, but I won't go out with them. I won't interact with them much. If they want a copy of my, I mean that answer writing practice that I had done, if they want a copy of that, I'll give it to them. But and that's how I used to stay motivated. That I am committing, I am doing this sacrifice for my tomorrow. अगर मैं आज एक भी मिनट वेस्ट करता हूँ या करती हूँ तो ये मेरे कल पे असर डालने वाला है। आई यूज टू से टू माई सेल्फ, ये इतना लंबा सिलेबस है, हम जो आज इस वक्त अपने हाथ में लेके बैठ रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा कभी यूपीएससी की तैयारी करते हुए यही टॉपिक हम दोबारा पढ़ पाए। तो आई यूज टू टेल माई सेल्फ टूडे and right now is the time, it's not going to come back, and I think that only helped me। मतलब बाकी सारी चीजें तो टेंशन ज्यादा हो जाता है, बट ये चीज के टाइम निकल रहा है, ये चीज कि सबिहा तुमसे तुमसे ज्यादा अच्छा, हाँ, आई शुड टेल यू दिस, इट रियली हेल्प मी। My sister had told me once that since I used to be that topper kind of thing, so she used to tell me कि Sabiha, you are not, your competition is not with the people around you that you can see or you can meet and whose marks you know. Your competition is with a perfect Sabiha. You might never meet her, but there's one Sabiha, उसको सब कुछ आता है, ठीक है, उसको खेलना भी आता है, उसको पढ़ना भी आता है, उसको याद भी सब कुछ रहता है, वो हमेशा तुमसे एक कदम आगे है। तो यू हैव टू कम्पीट विद दैट सबिया। ये सब जो आप खुद से जो आप खुद को मोटिवेट करेंगे ना, ये सब सोच के उसी से मोटिवेट होंगे, इसमें दूसरे आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप हमें मैसेज करके या आप मतलब थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू आर कॉन्टैक्टिंग मी एंड यू आर ट्राइंग टू गेट न्यू सोर्सेज ऑफ गेटिंग मोटिवेशन। हम बोलेंगे आपसे, आपको 2 दिन वो बात दिल में आपके दिमाग में रहेगी, लेकिन इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। जैसे ही आपको सिलेबस देख के और टाइम अगर आप गिनने बैठेंगे ना, आपको इतनी टेंशन हो जाएगी कि मैं इतना सारा मुझे बस हमारा मोटिवेशन वही होता था कि हमारे पास टाइम नहीं है, टेंशन लेने का भी टाइम नहीं है। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू कीप माई सेल्फ सेम। बाकी सबका अपना तरीका ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो चीजें हम बता रहे हैं वही सही है, आपका खुद का भी अपना कुछ हो सकता है। और मोटिवेशन बहुत ही पर्सनल चीज है, आप खुद अपना निकाल सकते हैं कि कैसे, हाउ टू कीप मोटिवेटेड। बट यही है, जो आप चाहते हैं, अगर आप वो सच में चाहते हैं तो आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे मोटिवेट रहो या वैसे मोटिवेट रहो। आई होप आई मेड सेंस। कभी कभी व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग आई जस्ट आई कीप टॉकिंग। यू रियली डू एक्चुअली। यही यही बात है कि वो ड्रीम आपका है और आपको अपने आप को चैलेंज करना है। वो किस तरीके राइट, से आप कर रहे हो, क्या मोटिवेट कर रहा है आपको, इट इज जस्ट यू दैट मस्ट मोटिवेट यू। एग्जैक्टली। बिकॉज And if you एनी feel मोटिवेशन, demotivated in या between, I'm sorry, I'm interrupting you. And if you feel demotivated in between, that means you don't really want it. क्योंकि अगर आप चाहेंगे उस चीज को तो आपका बीच में होगा ही नहीं ये सब, आपको बस एक पॉजिटिव स्ट्रेस रहेगा कि मेरा इतना बाकी है, आज मैंने 15 मिनट वेस्ट कर दिया एक्स्ट्रा, या आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, या जो भी है। हम्म, एग्जैक्टली। या मैम, कैन यू हियर मी? Yeah, I think, yeah, there was a disturbance, but I can hear you now.
That's what I was saying. Actually, I heard it somewhere from some officer itself that videos cannot motivate you every day. Like once you watch it, how many days? Maybe a few hours, maybe a few days. Then afterwards, you'll need to watch it again to get motivated. So motivation must come from within, not from the videos I or used not to from do the books. one I used to do one funny thing. हमने 2-3 मूवीज पकड़ ली थी और पूरी तैयारी में फॉर वन होल ईयर आई यूज्ड टू वॉच द सेम मूवी. वन वाज चक दे इंडिया एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. वो तब नई नई शायद आई थी और उसमें कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स ऐसे थे बिल्कुल हमें लगता था शाहरुख खान ही सेइंग इट फॉर मी ओनली. And then those girls have been shown. They all had their different struggles and then their own mindsets. और इट यूजुअली और हम क्या करते थे लंच या डिनर करते वो 15-15 मिनट. ये नहीं कि हम लेके उसे बैठ गए. 15-15 मिनट बीच बीच में देखते रहते. देयर वर अ फ्यू आई मीन वन मोर वॉर मूवी दैट आई यूज्ड टू वॉच. दैट्स व्हाट यूज्ड that also used to motivate me. वही हम कह रहे हैं आपका अंदर से ही आएगा वो. अब आपको क्या देख के अच्छा लग रहा है वो आपका खुद का है. I can learn from you so much, and I can connect on another level. I cannot tell you that mine is Laksh. I watch Laksh all the Oh, time for 10 minutes. okay, wow, Yeah, whenever all I'm right. doing nothing, I That just is a watch Laksh. very good movie. Yeah, Mm. it's a very good. Okay, now coming to another thing because we need to keep the session also. तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एक्चुअली हमारा जो सेशन है हमारा मोटिव है विद दीस सेशंस इज टू टेल पीपल अबाउट द सर्विसेज. टुडे आवर टॉपिक इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज. Tell the aspirants about these services that after allocation of the services, how it goes, what kind of training you go through, and what is the process. Yeah. Okay, okay. It's like first of all we would be doing our foundation course. Uh, what used to happen earlier, for example, I think till 2003 or 4, till 2003 or 4 the foundation course used to happen for all the services at Labasna Masuri only. Now what has happened, the number of successful candidates, the what is it, the size of batches has increased so much. 800-900 लोग select होते हैं. तो because of that now I think foundation courses are being held all over India at 4 places, I guess. One's Masuri, one's Hyderabad, one's Bhopal and Nagpur. I'm not very sure. ये change होता रहता है. So Okay. from our batch, foundation course started to happen at Bhopal. It's called RCVP Norona Academy. Very, very beautiful place. और फाउंडेशन कोर्स तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सरकार जो है वो पैम्पर करती है आपको. मतलब दे ट्रीट यू एज इफ यू आर जस्ट बॉर्न. बस इस पैदाइश में डिफरेंस ये है कि यू हैव बीन बॉर्न एज एन ऑफिसर. मतलब नॉट एज अ बेबी बट यू आर बॉर्न एज एन ऑफिसर. और आपको इतना ओ गॉड बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है फाउंडेशन कोर्स में. अब ये भी बहुत पर्सपेक्टिव लोगों का अलग है. कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या है सुबह उठ के जा रहे हैं वगैरह वगैरह क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है वो सब होता है. बट हमें तो आई रियली एंजॉय. दैट विल गो ऑन फॉर अराउंड 3-3.5 months. उसके बाद एंड देन इट्स इंटर सर्विसेज. जैसे हम लोग बहुत सारी सर्विसेज के थे सब मिक्सड अप थे. मतलब जो हमारे बैच के IRS IT के लोग होंगे वो अलग अलग जगह सब इधर उधर थे. इस तरह से था. आफ्टर दैट आवर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग स्टार्ट्स एट नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अकेडमी. बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी अकेडमी है. नागपुर में it's there, it's located. And then कहने को we spent 16 months there, but we keep on roaming around. It's like we go for parliamentary attachment. We get to meet, call on honorable president. We get to meet different ministers, and then there are industrial attachments. मतलब ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई भी एक महीने में हम लोग एकेडमी में ही हों पूरे.
वो हमेशा इधर उधर रहता था. इंडस्ट्रियल अटैचमेंट्स में they would take us to different kind of industries so that we learn the process how it happens. And then there were on the job trainings. It's like we would be selecting, or we would be given certain cities where we can go and work with the already serving officers while we are only probationals. उसमें भी बहुत मजा आता था. And then we used to get attached with, it's called attachments, yeah, modules. Mm-hmm. So we used to get attached with other services also. For example, we had an attachment with Labasna. We went to NPA, National Police Academy, Hyderabad, and we went to Nasen. We went to FRI, Forest Research Institute, Dehradun. और बस यही करते रहते हैं हम लोग ट्रेनिंग में we just keep on going. Other the officers from other services keep coming to keep getting attached to our academy. वो छोटे छोटे इस तरह के सेशंस होते हैं कि वो एक कॉमन ग्राउंड मिल जाता है, एंड देन वी आर ट्रेन टुगेदर. एंड देन दो सेशंस एक्चुअली में वो ट्रेनिंग तो ठीक है, वो आप सीख जाते हैं सब, बट जो आपका कैमराडरी जो बढ़ती है आपस में, जो आप दूसरे सर्विसेज के लोगों से, आप ही के बैच के, आप एक दूसरे को जानते हैं, तो काफी एक्सपोजर होता है आपका. एंड देन we get to go, we have international attachments. We go to Europe, we go to the United States of America, we go to Southeast Asian countries, we have gone to Australia, South Africa, and mm, we have, I don't know, my batch didn't have it, but later batches began to have an attachment with Indian Army also. And yeah, it's very interesting. And then when we are at the academy, we undergo physical training. I opted for karate, and there's karate, there's yoga, there's normal PT, and then there's so much to do. There's so much to do, and then we are trained in Income Tax Act. Basically, काफी टेक्निकल होता है. बहुत कम समझ में आया था हमें ट्रेनिंग में भी. वो एक्चुअली में जब आप फील्ड में आते हैं तभी आपको ज्यादा समझ में आता है. तो ट्रेनिंग इज ऑल इन ऑल, दे एम्पथाइज विथ यू. उनको लगता है कि ये लोग बेचारे सारे, दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम अमंग द बुक्स. नाउ इट इज टाइम कि जो भी इन्होंने किताबों में पढ़ा था इनको असली में दिखाते हैं कि क्या क्या होता है. सो इट इज लाइक दैट. वंडरफुल पीरियड, मतलब वंडरफुल. I'm sure it is like a really good experience, overall development of personality. Yeah, yeah. Yeah. So when I was researching for this Indian Revenue Services, so I got through this video जिसमें कि लिखा हुआ था कि Indian Revenue Services perfect life work balance. Okay, it is a perfect services if you want to create a perfect work and life balance. Okay. So is it like that? Okay. You get perfect time for work and then you're like. If had you asked me that question in the first few years of my service, I would have disagreed with you. Can you hear me? Yeah, I said, had you asked me this question in the first few years of my service, I would have said no. It's not like that and all those things. But as years have passed, I have realized it is not an all-time fact, but because it depends which place you are posted in, which section of the department right now you are working in, which year it is, which month of the year it is, which day of the month it is. Yeah, it matters a lot. And mostly it matters, most importantly, it depends upon who's your boss. But over the years, I have realized that there is a better, better personal life that I have found others getting envious of. Especially the weekends that we get. Usually our Saturday, Sundays are off. But when was there, you can't. I mean, Saturday, Sundays are gone down. They go down the drain. So I would say that that way it's not perfect, but yeah, the scope is better here. It is better. One more thing I would like to add. Back then, I hadn't met my husband. So after I met him,
I realized that actually this is very good because he keeps getting posted to different states, and being an IRS officer, it's very, it's like it's written in the transfer policy that if I have a spouse who is working with central government or working with whatsoever, even state governments they allow, so I can be with him or be around him or maybe be in the same state. So I think that Oh, that's also is a amazing. very good thing as far as IRS is concerned. Okay. And now I'm coming to the serious topics which everybody Yeah. wants to listen and everybody talks about. And When I was okay. reading about this Indian Revenue Services, so I got there Indian revenue officers are the most corrupt ones according to CBI, and there have been many cases amongst the bureaucrats that are there that revenue officers have been into these matters a lot of times. So, what do you think? Why is this corruption present there, and actually how it happens? Because everybody has gone through that preparation stage. They must have thought something for their lives, and why it comes? Corruption, I think you already know what's corruption. Corruption is any deviation from the from what you consider as pure. Or Hmm. I would say that it's not it's not about the services. It's about it's about as us human beings. All human beings have this tendency to go corrupt. I'll just give you a very small example, and I'm not generalizing it. I'm not saying that everyone does it. For example, आपकी गाड़ी खराब हो गई है और आपको पता नहीं है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, मे बी आप किसी गलत मैकेनिक के पास चले गए एंड उसने मतलब हालांकि जो प्रॉब्लम थी गाड़ी में वो बहुत छोटी थी, लेकिन उस मैकेनिक ने जैसे फॉर एग्जांपल द कंपोनेंट दैट went missing could have been got in 1000 rupees, but he told you that it's going to cost you 10,000, 11,000, ma'am. So, and Hmm. then since you don't know anything about the vehicle, or since you have just bought the car and you are still learning about the car, you will see कि हाँ भाई ठीक है, मेरी नई नई गाड़ी है और मेरा क्या है मैं कर देता हूँ. तो जो मैकेनिक ने किया है वो भी करप्शन है. और हम सब लोग इंसानों की इंसानों की फितरत आप समझ लीजिए, जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप आप वो मौका छोड़ेंगे नहीं. और ये बात आपकी प्रिया, आई डोंट अग्री कि आईआरएस ऑफिसर्स को सबसे ज्यादा करप्ट माना जाता है. एक्चुअली होता ये है कि जब भी whenever somebody is whenever somebody comes under the scanner of CBI, it becomes a big headline. I mean, if you notice, सिर्फ आईआरएस ऑफिसर्स ही नहीं, किसी भी और भी सर्विसेज का कोई पकड़ा जाता है, अखबारों में भी वो काफी आता है, न्यूज में भी वो काफी कुछ आता है. बट व्हाट वाज आई सेइंग, या बट आई एम सॉरी, व्हाट वाज आई सेइंग, जो पकड़ा जाता Yeah. है, व्हाट वाज आई सेइंग, कि आई एम अगर सॉरी, आई किसी वाज ऑर्डर थिंकिंग में अबाउट. इट इज ऑल ओवर द न्यूज कि हाँ अगर कोई या भी इंसान उस जगह पे होता है या huh, I forgot whatever I was saying. Well, so I was saying, as a human being, yeah, okay, now I remember. As IRS officers, actually, we are seen to be primarily dealing with the money matters. इसलिए वो जब भी कोई आईआरएस का होता है तो ये हो जाता है कि अरे इट बिकम्स मतलब बिग थिंग. लोगों के दिमाग में इस तरह की इमेज आती है कि ये वहां से पैसे गिन रहा था और वहां से उसने उठा के जेब में रख लिए. मतलब इस तरह की इमेजरी दिमाग में बनती है. मतलब एंड दिस इज नॉन डेलिबरेट, कोई मीडिया वाले भी ऐसे नहीं करते हैं, बट चूंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रेवेन्यू बीच में आ रहा है तो वो लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा उस पर चला जाता है. एंड एज आई गेव यू एन एग्जाम्पल लाइक दैट, इस सर्विस में हर आदमी के लिए मतलब एक आदमी को अपनी नॉर्मल लाइफ में जितना स्कोप मिलता है करप्ट होने का, उतना ही स्कोप इस सर्विस में भी है. जस्ट बिकॉज
मतलब ऐसा नहीं है कि those people who come under the scanner, they are only a, yeah, this is what I was going to say, they are only a tiny representation of the humanity at its worst. It does not say कि पूरा आईएएस सर्विस में ही ऐसा होता है या ज्यादा होता है. हम सब लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी, I don't know, I mean, this is what I personally believe. I mean, human beings, for them to remain pure is so difficult. And it's not our service, it's the human beings as a whole. I hope I satisfied your question. No, no, yeah, you surely did because I was reading this particular thing and I saw it on Wikipedia actually. Yeah, it was written there that amongst all the Okay. bureaucrats, it is like most, I'm going yeah, to check that page and yeah, report please, it. please do that. No, but Yeah, you were please, saying that please go yes, on. human beings, yeah, actually you are true that normally also when we see people around us and if they can get their work done in an easier way, they'll go for it. They'll be like, yes, let's just give money. Yeah. Now am I audible? Yeah, yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Am I audible properly? Yeah, yeah, I am. Yeah, I mean, sorry. Yes, you are. Okay. So the thing that you are saying that normally it is a human tendency that if they can get a अ, work done in a प्रिया, certain आपकी easy way, आवाज ना बहुत कम हो गई एक्चुअली, मतलब इतनी कम कि my connection is, yeah. Now is it okay? Battery 100%. Connected to Sabiha's gallery. yeah, please. Yeah. Is it okay now? Am I Yes, yes. audible? It's all right now. Yeah. Yeah, and so I was saying that actually the thing that you're saying that it is not about revenue officers or anything. It is about a human tendency. And actually, you are right. This is what I want to tell the people also through this session because whenever you talk to the aspirants or a general public, they are like, "Oh, he's in revenue department. तब तो बहुत पैसा होगा." ना, this is a general thing. You must have seen it. You must have heard it around you also. Mom को I had to brief my mother in the first few years. मम्मी, कोई अगर बात करे तो आप उसे समझाइएगा कि आपकी बेटी वैसी नहीं है. Then she used to say कैसी. I said, mom, आप बस इतना बोल दीजिएगा, लोगों को समझ में आ जाएगा. एंड देन आई मीन इट टुक इयर्स. ये जो सोसाइटी भी है ना, मतलब इन लोगों की एक्सपेक्टेशन भी एक्चुअली वो प्रॉब्लम भी है. मतलब वो सामने वाले को तो लगता है कि when I used to जैसे when I use my personal vehicle to go to the market, जैसे उसमें थोड़ा बहुत ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हल्का सा लग, since I mostly live alone and drive alone, तो just for the safety sake I had written छोटा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसको ना हम बहुत दूर पार्क करते हैं हमेशा, जहां भी हम सामान खरीदने जा रहे हैं. नहीं तो वो लोग हमें, मतलब दे आर, आई डोंट नो. एंड देन दैट्स आल्सो अ सॉर्ट ऑफ करप्शन भाई. आप जस्ट बिकॉज कोई सामने वाला अगर सरकारी है या कुछ भी है. एंड देन आई हैव रियलाइज, प्रिया, नॉट ओनली रेवेन्यू सर्विसेज, किसी से भी, किसी को भी आप बोलेंगे सरकारी सरकारी में है तो पहला इंप्रेशन यही आता है, हाँ इसने तो अपना सब सेट कर ही रखा हाँ, होगा, जो कि बहुत गलत है. exactly, बहुत ज्यादा exactly, गलत है. exactly. ऐसा होता, had everybody been behaving like that, then our country would not have achieved the heights that it has. अगर ऐसा होता तो. जी, please carry on. Yeah. Thank you so much about talking about this thing. I lost you actually. Can you hear me Yeah, I and think am I visible yeah, properly? yes, yes. I am sorry, हमारे ये ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है नेटवर्क की. It's okay, ma'am. The conversation is interesting and you are so honest about the things and you're telling the reality actually. Now, which people usually don't talk about. People mostly say that, yeah, I don't want to talk about it. It's already there. Thank you so much. Now, you have already told this in your answer, but I was going to ask you that there is this thing that a bad fish spoils the whole pond. There's a saying that we have heard since we were kids, Yeah. but I think it is not true because if
even if it's there, it doesn't take you in the loop. It's your choice that if you want to go Yeah, there or not. exactly. Thank you for asking, I mean, talking about this proverb. ये प्लीज जो एस्पिरेंट्स जो सुन रहे हैं उन लोगों को एक्चुअली ऐसा होता है ना, आप इतनी मेहनत करके इतना कुछ सैक्रिफाइस करके फाइनली यू बिकम एन ऑफिसर, आपकी ट्रेनिंग पीरियड इतना अच्छा जाता है, उसके बाद देन यू गेट फेस टू फेस विद द रियलिटी, तो थोड़ा Hmm. जब पहली बार ही होता है ना, दैट्स द टाइम टू चूज एक्चुअली, क्योंकि Okay. एक बार आपको बस चूज करना है, राइट एंड Yeah, ma'am, I have lost your voice and your video too. Now I guess. Yeah, ओके, now you're audible. yeah, I'll use this opportunity to advertise myself also a little. Mm-hmm. No problem. There's a problem with internet connection, I guess, because ma'am, I've totally lost you. Yeah, I can hear you, but you're not visible properly. Okay, am I visible now? Uh, Not yet. But then you're audible. You Okay, can all right. receive. What was I saying? Say. I was saying that recently I have joined. Yeah, I was saying I'll advertise myself a little, and I have joined. I have never been on social media much. I'm not. I'm a very shy kind of person otherwise. So recently I have joined because I have taken my writing very seriously, and to be very honest, becoming a writer was my first goal. But somehow, as Okay. I have told you, things took a very different turn, and then I keep writing thoughts also. So I had written a thought a few days back, and it said that every one of us already know what is right and what is wrong, and it is the choice. The thing is that we have to make a choice and then stick to it. उसके बाद फिर ये हो जाता है, एक बार आप सही once you I'm sorry, once you have decided, अगर आप सही की तरफ आपने चूज कर लिया, तो बहुत मुश्किल लगेगा आपको, बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा प्रिया. यू विल Hmm. स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि क्या मैंने इतनी मेहनत और इतनी सारी मुसीबतों के लिए की थी. बट ये सब चीजें जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना कि क्या कहते हैं, ओके, रूमी का भी आजकल एक बहुत फेमस है कि अगर आप हर रब से परेशान, मतलब रब इन द सेंस हर ब्रश से परेशान होने लगे. I'm sorry, I'm taking calls. I'm really sorry. So Yeah, it's अगर आप okay. बार बार रब नहीं होंगे, आपको मतलब अड़चने जब तक नहीं आएंगी, आप पॉलिश कैसे होंगे. स्वामी विवेकानंदा का अपना थॉट है कि अगर आप किसी Hmm. रास्ते पे चल रहे हैं और मुश्किलें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं. दीज थिंग्स आई हैड रेड अबाउट देम. होता है, हम सब लोग पढ़ते हैं, जैसे ऐसे स्पेशली सरकारी स्कूलों में या सरकारी ऑफिस में ये थॉट्स ना सारे सब लिखे रहते हैं, और हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोग देखते भी हैं. और फिर जब ये सब होता है ना, एक्चुअली दैट्स द टाइम व्हेन you should understand the meaning of those thoughts. So I would say Hmm. कि it's all, you always have a choice. हम choice में adjective लग जाएगा, मुश्किल choice या आसान choice, but choice हमेशा होती है. And God always helps you, and I believe in karma. वो सब कुछ होता है. तो इसलिए आप Yeah. सब लोग इतनी मेहनत करके जब आप ऑफिसर बनेंगे, गॉड विलिंग, तो इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिंदगी हम लोगों की ऑफिसर बन के ही खत्म नहीं हो जाती है, स्टार्ट होती है. Hmm. हम लोग का मेन ट्रायल, ये जो क्या बोलते हैं, यूपीएससी जो था, ये तो ट्रायल था, जो एग्जाम वगैरह था. आपकी Yeah. मेन जो आपका, आप में कितना दम है, या आप कितनी
अफसरगिरी आप में है, ये आपकी बाकी की लाइफ आपको टेस्ट करती है। उसको देखने के लिए ये कोई और बात नहीं होगा, आप अकेले ही होंगे बस। सो प्लीज ये बाद देखिए। में चीज में पता चलता है। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छी बात बोली है आपने, एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात बोली है कि इंसान उसको पढ़ता तो रहता है, हम लोग बहुत बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छी बातें दिखाई जाती हैं कि हाँ ऐसा है ऐसा नहीं है, बट देन असली में वो आपके ऊपर है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं। एग्जैक्टली। नाउ अभी बहुत हो गया कि ऑफिसर्स के साथ क्या होता है, उनके कंसर्न्स क्या है, इश्यूज क्या है। आप एज इन मतलब आप Whether you are टैक्स 100% डिपार्टमेंट में हैं, यू आर connected इन to द एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपने बहुत ही क्लोजली देखा होगा अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, द चैलेंजेस दैट यू पीपल फेस इन दिस कंट्री, बिकॉज द पॉपुलेशन इज टू मच एंड आई नो देयर आर सो मेनी challenges that people face. It's not easy to control such a big population, no? या So what are the challenges that you face in this field while dealing? आई वुड I would just reply to this in a very general manner. Uh, and from my own experience, it's very a personal opinion. I'm not commenting upon anything else. Uh, Apart from the rich and the super rich, the main problem with our people is ignorance of the law. जैसे Hmm. लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये गलत कर रहे हैं। मतलब टैक्स ऐसी चीज है कि पैसा ऐसी चीज है कि इंसान खुश होके कभी उससे अलग नहीं होता है। बट स्टिल अगर Hmm. आपको लॉ पता हो, अगर आपको समझ हो लॉ की कि ये होता है ऐसा या ये नहीं होता है, तो आई थिंक यू विल बिहेव बेटर। क्योंकि कोई, नो बडी लाइक्स टू बी कॉल्ड अ चोर, नो बडी लाइक्स टू बी कॉल्ड करप्ट, कि everybody wants to be, I'm talking about the general public, I'm not talking about rich and the super rich. They understand the Hmm. law and all those things are there. एंड देन बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस देर इज मिसट्रस्ट। मतलब हम लोग जो भी बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब हमेशा उल्टा लिया जाएगा। ये सब एक्चुअली एजुकेशन से, Hmm. ये एक सोसाइटी की बड़ी प्रॉब्लम है। कहने को Hmm. लिटरेट है लेकिन एजुकेटेड नहीं है। सो देयर इज अ मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट ये भी है, टैक्स पेयर्स को ये भी मिसट्रस्ट हो जाता है, उनको लगता है सीए गलत बता रहा है। और ऑफिसर या गवर्नमेंट मशीनरी पे तो उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। एंड देन देयर इज दिस मिसट्रस्ट होता है, तो वो नफरत करते हैं हम लोगों से। वी आर हेटेड लॉट, यू नो, वी आर नॉट लाइक Hmm. बाय एवरीवन। इनफैक्ट हमें अपनी सर्विस की ये चीज बहुत अच्छी लगती है दैट यूजुअली वी ऑल द टाइम वी वर्क अंडर कवर। इट्स लाइक Yeah. जो भी हम लोग को है, वी वो हम लोग सिंपल आराम से अपना जो भी हम लोग को रेकी करनी है या जो भी करना है चुपचाप कर करा के, एंड देन वी डोंट इवन, एंड वी वर्क वेरी साइलेंटली। एक तो अंडर कवर होता है और साइलेंटली अगर कुछ किया भी है तो उसको बिल्कुल भी मीडिया में कुछ भी नहीं, बस जो हम लोग का अपना है हम Hmm. लोग अपना करते रहते हैं। सो उसकी वजह से, हालांकि वो जरूरी है, मतलब दैट्स हाउ इट वर्क्स, जरूरी है, बट उस वजह से मिस्ट्रस है, हेट्रेड है, एक वॉलेंटरी कंप्लायंस की प्रॉब्लम है। बट दैट्स द प्रॉब्लम विद इंडिया एट लार्ज। लोग खुद Yeah, से, exactly. इसीलिए तो वो हेलमेट के लिए भी लोगों को पेनाल्टी जब तक लगाएंगे नहीं, वो पिलियन राइडर हेलमेट पहनेगा नहीं। मतलब ये इंडिया की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वही सीप इन करके हम लोगों की भी है। हालांकि आई वुड लाइक टू एड दैट आवर सर्विस एंड आवर डिपार्टमेंट is way ahead of other department as far as these taxpayer services are concerned. अभी तो हम लोगों का recently faceless assessment भी roll out हुआ है। हो सकता है, I don't know how helpful it's going to be for UPSC aspirants, but इस साल से जैसे जो स्क्रूटनी होती थी या हियरिंग्स हम लोग करते थे, उनसे बुला के उनकी इनकम को जो डिस्कस करते थे, इट्स ऑल गोइंग टू बी jurisdiction less and faceless. It's all going to take place through the medium of information technology. मुश्किलें एक्चुअली हमेशा रहेंगी, वही है, दैट्स व्हाट आई सेड। शुरू में हमने ये समझा कि हर चीज काम कैसे करती है, अभी हम ये कर रहे हैं कि इट हैज टू वर्क। मतलब कुछ हम ऐसा करें कि चले, बात आगे बढ़े, काम आगे बढ़े। Exactly. And there's a problem with, I don't know with our country or all the countries, but because of the population, I guess the base, वही आपकी जो बात है कि लिटरेसी है लेकिन बेस अभी उतना लोगों को नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में। वो सबसे पहले
वो किसी को भी जिसको वो पार में देखेंगे, जिसको देखेंगे वो उस पे ब्लेम करते हैं. दे डोंट सी Right, themselves that whether they are right, right. doing in the right way or not. Yeah, exactly right. Now, one thing I would like to ask you, that as a women officer, now our Yeah, history has been very discriminated against the women. We have always said that women are not that efficient as the men are. They cannot take decisions. They cannot be tough. No, so as an officer, you have served for so long now, and you must be knowing. तो क्या अभी भी आपको ये differences दिखते हैं in service या as a person जब आप उस level पे हो? ये ये हम लोगों की मतलब क्या बोले, एंड इट्स नॉट अबाउट आवर कंट्री ओनली. आई रियलाइज इट्स प्रिवेलेंट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. I have been facing challenges as a lady officer since the beginning. अभी भी होता है, ऐसा नहीं है. मतलब I'll tell you, if you are assertive and if you speak your mind, then you will be treated as very bossy. And if you Hmm. are very polite and very affectionate, then you'll be taken for a ride. And actually, what I do on Instagram every other day, I hold these polls also. I mean, incidentally, day before yesterday only, I asked this question. The Okay. question was whether, yeah, I had asked, do you think that despite equal pay at work, women are still treated as unequal? So that's very true. If we are, and then that's how our culture is actually. I mean, we have, women have already, women have always been seen as, shown as this weak, fragile Yeah. being who are capable of only giving motherly love. I mean, Yeah. and if they try to be tough, they are looked at. I mean, people get very what to say. They'll say ये तो फालतू में बॉस बनने की कोशिश कर रही है, जबकि बात में दम होगा, ऐसा नहीं है. और ये Hmm. मुश्किल to all the female aspirants listening to me, आपको ये मुश्किल पूरे टाइम झेलनी है. आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि अभी अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि औरतों की हालत अच्छी नहीं हुई है. वी आर, at times I thank God that I am born in India, because इंडिया में औरतों को शुरू से वोट करने की, इक्वल पे फॉर इक्वल, मतलब वी डिडंट हैव टू फाइट दैट मच फॉर द Hmm. इक्वालिटी विच अदर कंट्रीज हैव बीन डूइंग. तो आई ऑलवेज थैंक गॉड Hmm. कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं. एंड देन आई थैंक दैट हम इस एज में पैदा हुए हैं जहां हमें जैसे आई बिलोंग टू, आई ब्रिंग माई रिलीजन इन, बिकॉज इट नीड्स टू बी टोल्ड. इस्लाम में भी या मुस्लिम में भी, इस्लाम में तो नहीं, लेकिन मुस्लिम में भी बहुत होता है कि लड़की है, मतलब यू आर सपोज टू गेट मैरिड एंड देन हैव अ फैमिली, घर का खाना बनाओ, बच्चे पैदा करो, वगैरह वगैरह. ये सब आप अपना, ये सारी जो चीजें हैं, जो आपका स्टीरियो टाइप बन गया है ऑफिसर का, ये आपके साथ आप जब पैदा हुए तभी से बन गया है ये. और Yeah. Yeah. आप जब एक्शंस के, जब आप अपनी जिंदगी लीड करेंगे, एंड देन द वे यू कैरी योरसेल्फ, दैट्स गोइंग टू इवोक, आई मीन दैट्स गोइंग टू चेंज देयर बिहेवियर. उनका परसेप्शन है वो तो हमेशा से वही है और हमेशा से वही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि सीनियर्स से, in my services also I have realized that a male officer is considered a performer until proved otherwise, and a female officer is considered a non-performer until proved otherwise. तो हमें भी शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. शुरू में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और काफी फ्रस्ट्रेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है. वो तो फिर आई रियलाइज कि वो तो आप जिंदगी में होना ही होना है. मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, आप जब शुरू करते हैं कोई काम और कुछ नया करते हैं, तो मुश्किल होता है. एंड देन नाउ अब तो 11 साल हो गए हैं, तो एटलीस्ट हमारे सीनियर्स के दिमाग में या एक जनरल एक रेपुटेशन सेट हो गई है सभिया की, कि सभिया इस तरह से काम करती है या सभिया उस तरह से काम करती है. मेन Hmm. जो हमें चैलेंजिंग लगता है वो सबॉर्डिनेट को डील करना लगता है, क्योंकि हम लोगों का जैसे ट्रांसफर होता रहता है. ट्रांसफर अगर शहर चेंज ना भी हो, तो टीम्स चेंज होती रहती हैं. जैसे वी कीप गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स. अब उसमें Hmm. लोग चेंज होते हैं. और जैसे जोधपुर जो है, अगर कोई जोधपुर से हमें सुन रहा है तो प्लीज बुरा नहीं माने, लेकिन बहुत ही जेंडर बायस्ड, जेंडर सेंसिटिव जगह है.
यहाँ पे सा करके आई मीन एवरीबडी इज गोइंग टू गिव यू रेस्पेक्ट, बट जब मुश्किल टाइम आएगा, या जैसे हम जो जितना जितना जितनी एफिशिएंसी किसी काम में चाह रहे हैं और हमारा स्टाफ अगर वो नहीं कर रहा है, और अगर हम उससे गुस्से से बात करेंगे या हम उस तरह से बात करेंगे, तो इट माइट बैक फायर एट मी, मतलब बड़ा ही ट्रिकी सा होता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी सा। एंड देन एज ए वुमेन एक ठप्पा भी लगा हुआ है कि जैसे आप सरकारी नौकरी में आ गए हैं और बस अब तो आप 10 बजे आएंगी, 6 बजे चली जाएंगी, आप बीच में कुछ काम नहीं करेंगे। ये भी आई विल ब्लेम माइनॉरिटी ऑफ द वुमेन ओनली, क्योंकि उन कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो करती हैं इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल मे बी फर्स्ट फ्यू इयर्स दे वर very good, but then they got involved, they went into family way, and then they had their own I don't think so कि इसका जेंडर से कुछ लेना देना है। ये जो चीज है कि पहले आपने बहुत अच्छे से काम किया, बाद में नहीं किया, ये एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी कमी है, एज ए वुमेन आपकी कमी नहीं है। बट लोग इसको इसको भी लोगों ने इतना बड़ा चढ़ा कर दिया है। जैसी फॉर एग्जाम्पल कोई भी आता है, जैसे मतलब इतना हो गया है कि हमारे दिमाग में भी कभी कभी आता है, इफ आई एम गेटिंग अ लेडी असिस्टेंट कमिश्नर, तो हमारे दिमाग में भी आएगा कि यार वो ढंग से काम तो करेगी ना, मतलब देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क हमारे, या क्योंकि उन लोगों की वजह से जो, मतलब ऐसा नहीं है कि आई बी माई माइंड विल बी बायस्ड एंड आई वोंट गिव हर अ चांस, लेकिन ये ऐसा है, प्रूव आपको करना पड़ता है। एंड आई इसीलिए कम टू द, दिमाग में हमारे बन गया है। हाँ, करेक्ट। और कुछ कुछ माइनॉरिटी की वजह से वो उससे और एम्पलीफाई भी हो जाता है। जैसे या I think I won't talk much about it, but you must have got the point. कुछ या कुछ लोग, बट उस तरह ऐसा नहीं है, आदमी लोग भी होंगे जो बिल्कुल काम नहीं करते होंगे, लेकिन उनको उतना इनएफिशिएंट नहीं बोला जाएगा। वो लेडी जिसके घर में 2 बच्चे हैं और वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, उसको सब लोग इनएफिशिएंट बोलेंगे, मतलब दैट्स आल्सो देयर। I also would like to add one point here, especially for the male aspirants जो कि गॉड विलिंग ऑफिसर बन के उसके बाद फिर लेडी ऑफिसर से ही शादी करना पसंद करेंगे। उन लोगों के लिए आई वुड लाइक यू टू नो कि आप लोग प्लीज डबल स्टैंडर्ड मत रखिएगा। आप अपनी वाइफ से, अपने जो लेडी ऑफिसर आपके घर में है एज वाइफ, उससे आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा दैट शी विल हैव टू पर्सनालिटीज, कि वो ऑफिस में तो एकदम ऑफिसर की तरह रहे। इट बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन वेरी लकी इन दिस एस्पेक्ट, बट आई हैव कम अक्रॉस केसेस जहां पे हमसे भी बोला है लोगों ने, वो भी हमारे घर वालों ने नहीं, दूसरे लोगों ने ऐसे ही, कि मैडम आप तो घर में हो तो घर की तरह ही रहो, घर में तो ऑफिसर की तरह थोड़ी ना रहते हैं। हमने कहा ये घर में घर की तरह रहना क्या होता है? तो ये चीजें आप लोग जो मेल एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली, या जो भी आदमी लोग और जो भी हमें सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज ये डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए। आप ये भी चाहते हैं कि आपकी वाइफ एक अच्छी पोस्ट पर हो, एक ओहदा रखती हो सोसाइटी में, और आप ये भी चाहते हैं कि जब आप घर पहुंचे तो आपको गरम गरम चाय मिले। तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। आप दोनों एक दूसरे की खिदमत कर सकते हैं, यू बोथ कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू बोथ कैन keep each other on a very high pedestal, or and this is very necessary also. So, and these are small things which we don't realize, but they affect us in a long way. एक लेडी ऑफिसर का करियर भी बहुत अफेक्ट होता है इन सब चीजों से। देयर इज प्रॉब्लम एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम। Yeah, I think things will change because now we have people like you, like Oh. governing us. Yeah, because when we listen to some person who is talking about this and who is so honest about this, तो आपको relate हो पाता है that yes, things need to change, and then you're like no, I won't go for it. अगर आप ऐसे act कर रहे हो तो मैं ये चीज नहीं, मतलब Yeah, I won't take it. Yeah. So I think things will change, but it would take time. And the yeah, problems that you discussed are very real. They are very real. Nobody wants to talk about it. Girls have kind of like admitted it in their life that it's okay. Yes, we have these yeah, problems. कोई नहीं, बात यही कर होता सकते है, हैं, यही होता रहेगा, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा. But then you see that I think women are more efficient because they carry such thoughts in their mind plus their work, and then they are leading forward.
They have to care about नहीं, that is everything and still yeah. moving forward. Thank you for saying that. That's also what I meant कि आप फिर एक तो डबल स्टैंडर्ड मत रखिए और डबल एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिए. If she is spending some 10 hours outside and then you expect her to come back and cook, तो फिर ये तो नहीं हो पाएगा. दोनों में से कोई एक ही चीज हो पाएगी. या बच्चा जो है वो सिर्फ एक की जिम्मेदारी हो जाए. आप उससे बाहर का भी, एक तो लोग, आई डोंट नो, दीज आर और थोड़ा विमेन रिलेटेड इश्यू है, बट लोग हाउसवाइफ को तो कुछ समझते ही नहीं, जबकि इतना काम होता है घर में, तो बहुत ज्यादा काम होता है. तो अगर आप, इफ देयर इज अ लेडी ऑफिसर इन योर हाउस, यू हैव टू रेस्पेक्ट हर by understanding that she has a full-time job outside. You can't expect her to come back and then get busy with the house stuff. In fact, you should make her comfortable. कि थकी हारी आई होगी बेचारी. We are more efficient, I don't disagree, but that does not mean that we would be trained like that. Yeah, you're not trained. Huh? Actually, women tend to train themselves like that. Ki, yeah, it is our duty. I have to do it. I have to take care of some family. They also accept that, which is not acceptable. I think females must understand more than the males. Yeah. Yeah, So, lastly, I think we have talked about many important issues and very, very hot issues of our yeah, country. I'm sorry I've taken much of your time. I No, had no, I no. had kept It this is whole hour free. I had thought कि हम एकदम अच्छे से एकदम दिल खोल के बात करेंगे. No, it was really nice talking to you, ma'am. Like, I am taking session. You are the first female who came to this UG Talk session, and Okay, I'm all really right. Oh, okay. impressed. You are such an Oh, thank inspiration to me, and I really like talking to you. Now, lastly, I want to talk about hobbies. People usually okay. think कि आप अगर preparation कर रहे हो and then you are in this job, then you cannot pursue your hobbies. And I went through your Instagram actually, and that Oh, addiction okay. post, I saw that I loved it actually. Let me Which one? quote I'm that. sorry. Which one? That addiction post अच्छा, that you okay. did. Yeah, हाल भरो. Okay. Mal, that it cigarette was wala. Okay. really nice. It was really nice, and I saw the Thank comments. you. I was Thank going you. through it. I was stuck to it actually. Now, Thank you. this thing that you told that you wanted to be a writer even before you came to Yeah. this. तो अभी इसको फॉलो करना और अपने मतलब it is a passion plus hobby. I can say that it is a passion Yeah. inside then you are pursuing Yeah. it as a hobby. तो इसको आप कैसे मैनेज करते हो with this workload and everything that we have talked about और उसके बाद एक पीसफुल माइंड से बैठ के to be a writer it needs inspiration actually. How do you manage that? Um, I will tell you. I will tell you something very important. Uh, Even if you clear UPSC, those who are listening to me and those who are going to listen to the recorded version of this video, even if you don't clear UPSC or if you clear UPSC, you need to understand yourself very well. Because at times we think that we want it, but then once we have it, uh, that thing doesn't make us that happy. I'm not saying that I'm not very happy. I'm only saying that I had been wanting to be a writer, and I kept on thinking that I want to write, and then so many things happened, and then I appeared in UPSC. Writing एकदम took a back seat. उसके बाद I joined field again. Writing took a back seat. उसके बाद now after 11 almost 12 years I have sat down to write because uh, and then I am busy. It's not that I am not busy. I am busy even now, but once you start understanding yourself, जैसे आई डोंट वॉच मूवीज एनी मोर. पहले हम मूवीज बहुत देखते थे. ये जब बिजी होंगे तो भी मूवी का ही है ना, आप पॉज किया एंड देन यू कैन जस्ट Yeah, कंटिन्यू एनी टाइम. उतना उसमें yeah, उतना वो नहीं चाहिए होता है. बिल्कुल ऐसे ही अब हम राइटिंग करते हैं. इट्स लाइक हमें ऐसा लगता है जैसे इतने सालों से जो, जैसे हमने कुछ देखा और जो हमारे दिमाग में ख्याल आया और हम लिख नहीं पाए, वो सारे अब एक साथ निकल रहे हैं. मतलब इट्स लाइक आई वाज हैविंग अ बिल्ड अप. मतलब एंड देन दिस जर्नी इज वेरी पर्सनल. आपका मे बी आपको कुछ और पसंद आए और अचानक आपको लगे. आई टेल यू व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग नाउ एंड नॉट बिफोर. अभी लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, तो आई थिंक द फर्स्ट लॉकडाउन,
तब सब पूरा एकदम बंद था, तो आई वॉज स्टक इन सम अदर सिटी, तो आई कुड नॉट गेट बैक होम एंड आई वॉज स्टक बैडली, मतलब बहुत मुश्किल से, फिर जब 20 अप्रैल को ऑफिस खुले थे तो बहुत मुश्किल से वापस आए थे। बट वहां पे ना कोई जानने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत अकेले थे। एंड देन आई wrote something after very long, and then I felt very good, मतलब very very good. I thought I showed it to my husband. He also said that yeah, it is good. Then I joined back office. उसके बाद धीरे धीरे ऑफिस ने भी अपना जोर पकड़ लिया. Now I now I realize that when I write, whatever stress that's beating me down, या ऑफिस में, irrespective of how bad it was or how hectic it was, when I write, I feel very good. I mean, and nothing has made me feel that good ever before. That's what I was saying. You have to understand yourself कि आपको क्या अच्छा लगता है काम के अलावा भी. हमेशा हम्म हमेशा ऐसा, मतलब हम ये नहीं कह रहे जैसे अब ये तो पूरे दुनिया का ही है. यू कांट अर्न मच बाय बिकमिंग अ राइटर. मतलब यू विल अर्न इवेंचुअली, लेकिन उसका स्ट्रगल इतना ज्यादा है कि आप अपनी फैमिली को तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर सकते. आई अंडरस्टूड दिस थिंग. हमें पता था कि अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते. एंड देन जो पिछले 11-12 साल बीते हैं, उसमें भी हम आई यूज्ड टू पोस्टपोन दिस कि हाँ ठीक है हम लिखेंगे, हाँ हम लिखेंगे. बट कोरोना की वजह से एक तो वो बीच में हमारे एक ऑफिसर को भी कोरोना पॉजिटिव, ही टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव, एंड हम आई हैड अ मीटिंग विद हिम, एंड आई वाज नॉट वियरिंग अ मास्क, तो वो उसकी वजह से आई हैड टू गो अंडर सेल्फ क्वारंटीन. तो तब भी हमें एकदम वो जो निर्वाण टाइप नहीं होता है, मतलब एकदम, एक तो आप हम्म अकेले कमरे में बैठे हुए, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज. एंड देन तब भी हमें यही लग रहा था कि जब हम ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, लेकिन सब हुआ जा रहा है और आई थिंक होता रहेगा. वो यही होता है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन. अब जैसे, अब नाउ आई एम इंस्पायर्ड इन अ डिफरेंट मैनर. अभी हमारा ये, हमें ऑफिस का भी करना है, घर में भी चूंकि डोमेस्टिक हेल्प नहीं आ रही है तो घर के भी काम करना है, एंड देन आई हैव टू राइट ऑल्सो. तो मजा आ रहा है, मतलब इट इज डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल. दैट्स व्हाट आई Actually, वांट टू से. your hobby, whatever you love, it keeps you sane. Amongst all the mess, it keeps you sane. Yeah, and these things, this also, that it makes me feel so good. It makes me sane. People who have found such thing only are going to understand the fullness of this statement. Because Yeah. जब तक आपको अपना पैशन नहीं मिला है, तब तक आप शायद बोलेंगे हाँ ठीक है, हाँ होता होगा, या हाँ ठीक है, हाँ बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं. बट जब जिनको मिल चुका है और उनसे आप ये बात बोलेंगी, तो दे विल अंडरस्टैंड मोर. So और actually, वो सेइंग कि यूपीएससी, यू वर सेइंग कि यूपीएससी प्रिपरेशन में भी हॉबी का आई टेल यू माय एग्जांपल. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब बैडली फॉन्ड, एडिक्टेड टू म्यूजिक. मतलब ऑफिस में भी जब, आई होप ऑफिस में भी जब कोई नहीं होता है तो आई लिसन टू म्यूजिक. मतलब और जब वो बहुत ज्यादा टफ काम होता है जिसमें मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है एंड लोग नहीं है, तो आई प्ले म्यूजिक. और when I'm very stressed, I play music. When I'm happy, I play music. When I'm doing nothing, I play music. So ये जो आदत है, पढ़ाई करते वक्त भी आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक ऑल द टाइम. रेडियो भी सुनते थे काफी, और गाना भी वो जो लूप पे नहीं चला देते हैं, hmm. इंस्ट्रूमेंटल ज्यादा सुनते थे हम. इट एक्चुअली हेल्प्स यू. एंड देन नाउ इट हेल्प्स मी इन राइटिंग ऑल्सो. तो आई कुड से दैट लिसनिंग टू म्यूजिक वॉज माई नंबर वन हॉबी ड्यूरिंग यूपीएससी, जो हमें रिलैक्स भी करती थी. राइटिंग तो आई डेंट डू एनी राइटिंग, ना हमने कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी बहुत ज्यादा, बस. बाकी तो और कुछ भी नहीं किया था. बट हॉबी प्रिपरेशन के दौरान भी uh, जैसे डेली बेसिस पे ना, आई यूज टू टेक 30 मिनट्स ब्रेक. उस 30 मिनट्स ब्रेक में जैसे नॉर्मली हम क्या करते थे, खाना खाते वक्त भी एआईआर न्यूज सुनते थे, या डिनर कर, जैसे लंच में एआईआर न्यूज सुन ली, डिनर में कुछ और कर लिया. या फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक, 15 मिनट के लिए वॉक पे गए, तब भी कुछ काम का ही सुन रहे हैं. बट एवरी डे आई यूज टू गिव माई सेल्फ 25 to 30 मिनट्स. उसमें हम 15 मिनट या तो वो चक दे इंडिया देख लेते थे, या आई आई लाइक ऑब्जर्विंग क्लाउड्स. हालांकि दिल्ली में उतनी वैरायटी नहीं होती है, तब थी, पहले थोड़ी और ज्यादा थी वैरायटी. तो
यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप। जो आप कर रहे हैं उससे बहुत हटके हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ होता है, आप ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कुछ तो आप ऐसा करें जिससे आपका दिल खुश हो। I used to do one more thing. I don't know if I should tell on this platform or not. हमारे कोई फ्रेंड नहीं था। एक आई यूज टू स्टे एट विजयनगर करके एक जगह है, वो कमला नगर और मुखर्जी नगर के बीच में है। मुखर्जी नगर में हम इसलिए नहीं रहे बिकॉज आई फाउंड इट वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, और विजयनगर इसलिए रहे ताकि मुखर्जी नगर शुड बी एट आर्म्स लेंथ, कि हमें जैसी जरूरत पड़ेगी आई विल जस्ट गो देयर। और वहां पे नीचे थर्ड फ्लोर पे हमारा कमरा था, और कमरा बहुत छोटा था बट बालकनी बहुत बड़ी थी उसकी। और पड़ोस में, तो वो बहुत अच्छा था, हम बाहर ही बैठते थे, बाहर ही पढ़ते थे, सर्दियों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। और नीचे पड़ोस में मे भी एक दो लोग थे जिनसे थोड़ी बहुत बात होती थी, तो कभी कभी आई यूज टू ट्रीट माई सेल्फ, आई विल, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, वहां से बहुत नजदीक था जहां हम रहते थे। तो एट टाइम्स व्हाट आई, क्योंकि हम ना तो घर जाते थे, ना हमारा कोई फ्रेंड है, ना बॉयफ्रेंड है, और घर पे हम में भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे, थोड़ी बहुत, और बाकी किसी से बातें नहीं करते थे। तो एवरी फोर्टनाइट और मे बी एवरी मंथ आई वुड ड्रेस अप, अच्छे से तैयार होंगे, और उसके बाद रिक्शा करके आई यूज टू गो टू विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, और वहां जाके आई यूज टू हैव a couple of cups of coffee with myself, and I would just observe people. वो एक्चुअली वो राइटर वाला दिमाग है ना, वही हम कह रहे हैं। अब सब अपना अपना खुद को एनर्जाइज करने के लिए, अब जैसे हम अकेले जाते थे लोगों को देख के कि अच्छा ये लोग इमेजिन कर करके कि ये कहाँ रहती होगी, क्या करती होगी, या कहाँ बैठता होगा, उठता होगा, इसका दोस्त क्या, इसके दोस्त ने इससे क्या बोला, इसका मुंह ऐसा बना हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जो हमारा इनहेरेंट जो पैशन था राइटिंग का, आई वॉज फीडिंग दैट पैशन थ्रू दिस। Yeah. इससे फायदा ये था, एक हम अकेले हैं, हम बिल्कुल एकदम पंक्चुअल रहेंगे, मतलब हमने आधा घंटा सोचा है तो आधे घंटे में हम जाके वापस आ जाएंगे, और आप एनर्जाइज भी हो गए। बाकी आपका अपना अपना वेट तरीका हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू हैव डिसिप्लिन ऑफ इट। No, this is something very nice actually. I cannot tell you. I really cannot express right now because this is a session, but I am connecting you like at another level, and I'm so inspired. I finally feel that yeah, some things I do right because usually when you are doing it, you feel no. I think this is wrong. This is the wrong way that you're going. But when I'm listening to you, then it's kind of थैंक यू। connecting. So, thank you, ma'am. I think this session has been long enough, and people were there all the या time. They were listening to you because you were so interesting, and the way you were telling things, it was unreal. It was not like you were acting formal or you're just trying to tell the like the famous things that everybody tells. No, you told the very minute things you discussed here, and it was really nice. It was really, really nice. Thank you so much for being here. I'm very very thankful to you as well to give me a platform कि हम इतने सारे लोगों से एक साथ आई एम एबल टू टॉक। आई मीन मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग, एंड कीप अप द गुड वर्क। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है। जैसे हमारे जमाने में तो ऑर्कुट था, वो तो कुछ भी नहीं था। तो इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट जैसे वो लोग जो बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो आपका इतने बढ़िया शानदार माशाल्लाह प्लेटफॉर्म से दे विल कम टू नो मेनी थिंग्स, जिनके लिए शायद उनको सब छोड़ के दिल्ली आना पड़ता है हमारे जैसे। तो आई एम थैंकफुल टू यू एज वेल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी हियर, एंड Yeah, thank you. Really, please keep thank you reading for my giving work. time to speaking here. You should read my short stories as well. वो 400-500 वर्ड्स की होती हैं, and they have very diverse themes, and people usually like it a lot. You should read my short stories also. You'll like it, I'm sure. No, no, yeah, exactly. I'm telling you, when I was going through your Instagram, I was really stuck to it. I was reading the post and I couldn't stop myself. Like for 1 hour, actually, I was reading all the posts. I went through the last one. I was like, okay, finally, it's finished. Yeah. So, Okay, thank you so even much. It means a lot to me. Thank you so much. Thank you. उसमें बहुत मेहनत लगी है, और if you have read it, it really means a lot to me. Thank you.
No, I'm sure it was because, okay, guys, I just want to tell you that if you want to follow ma'am, she'll be tagged in the post itself. So you can just visit the profile and go through that post. And my favorite one is that addicted one. It was really nice. Are you It not was an really addict? nice. It was Yeah. a hit, actually. Thank So you. thank you for being here, ma'am. Thank you. Have a nice day. And it was really nice talking to you. Yeah. Yeah, you too. And I'm sorry about the network connectivity. And I'm thankful to my office also. There has been the session has been smooth, other than those internet breakages. All right then, Yeah, no, Priya, no and problem. all those aspirants who are listening, ऑल द वेरी बेस्ट. और बहुत टाइम लगता है, अच्छी चीजों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग बीच में रुकिएगा मत. और ये कहने की बात नहीं है, ये आप खुद को एनर्जाइज करते रहिए. आप लोग जो चाह रहे हैं वो होगा जरूर. ऑल द बेस्ट. Thank you so much, ma'am. Thank you. And ऑलराइट. please ओके. keep up your writing thing because it's really interesting. Yes, I'm following you. I will. I will. Okay, thank you so much. Thank you.